अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्या है? इट इज़ बेसिकली करेक्टराइज्ड बाय द ब्लड पीएच and a decreased plasma bicarbonate concentration. Acidosis basically means that there is an acid in our body, in our blood, that when accumulates in the blood, that will lead to acidemia, that is increased acid concentration in the blood. So whenever there is an increase in the production of acid in the blood or accumulation of acid in the blood, it will lead to the decreased pH of the blood, and we will refer it to as acidosis. What is the reason behind this acidosis? In order to understand the reason behind this acidosis, we are here to understand a terminology which is basically anion gap. What is anion gap? Anion gap is basically the difference between the primary measured cations and anions in the serum. नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव आइंस होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव आइंस होते हैं। ठीक है, in order to maintain the equilibrium, in order to maintain the neutrality of our blood pH जो है वो रेंज करती है 7.35 से 7.45 तक, that is in the near neutral or a little bit moving on towards alkalosis, like alkali जो होती है ना, बेस की तरफ मूव ऑन करता है, alkalosis। नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड हमें कितने पता चल गई, 7.35 से 7.45 होती है, और इस पीएच को जो मेंटेन किया होता है वो पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस के न्यूट्रलिटी ने मेंटेन किया होता है कि जितने पॉजिटिव आइंस होते हैं उतने नेगेटिव आइंस होते हैं। ठीक है, ये हमने एक ड्रॉ कर लिया। इसमें हमने ये दिखाया कि ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करिए कि जितने पॉजिटिव आइंस हैं उतने नेगेटिव आइंस बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब एनाइन गैप बेसिकली क्या है? एनाइन गैप का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है कंसनट्रेशन ऑफ नेगेटिव आइंस, अगर क्या हो जाती है हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है कंसनट्रेशन ऑफ नेगेटिव आइंस, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन है ये डिक्रीज़ कर जाएगी। जब पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगा कि ब्लड की जो नॉर्मल न्यूट्रलिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव आइन की जो इक्वालिटी थी अब वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये एनाइन गैप बेसिकली क्या है? बॉडी के अंदर जो सोडियम की लेवल होता है, सोडियम के आयन की कंसनट्रेशन होती है वो 140 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन 104 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट आयन को हम कंसिडर करते हैं उसकी वैल्यू 24 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। जो बॉडी का तमाम पॉजिटिव आयन का फैक्टर होता है वो मेंटेन किया होता है सोडियम ने। ठीक है, और जो नेगेटिव आयन होता है वो क्लोराइड मेंटेन करता है। क्लोराइड के साथ साथ जो दूसरा आयन मेंटेन करता है वो है बाइकार्बोनेट आयन। तो अब हमने ये बात बता दी, जो एनाइन होता है, एनाइन कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का, वो मेंटेन कर रहा होता है क्लोराइड अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट, और जो पॉजिटिव यानी कि कैटाइन कंपोनेंट का होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है सोडियम। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि सोडियम की जो जो बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन है वो कितनी है, 140 मिली इक्वलेंट पर लीटर है। इसी के हमने चूँकि कैटाइन और एनाइन को इक्वल रखना है तो हमें जो ये हमारे पास एनाइन है इसको भी बेसिकली इक्वल होना चाहिए सोडियम की कंसनट्रेशन के। लेकिन अब बॉडी में क्या होता है कि हमारे पास जो है क्लोरीन और क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन मिल के हमारे पास एक जो है एनाइन ग्रेडियंट जो है मेंटेन करते हैं, वो कितना होता है, 104 मिली इक्वलेंट पर लीटर उसमें कंट्रीब्यूट करता है क्लोराइड आयन, और 24 मिली इक्वलेंट पर लीटर जो है कंट्रीब्यूट करता है बाइकार्बोनेट आयन। अब जब हम इसकी क्लोराइड की बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन और क्लोराइड की कंसनट्रेशन को ऐड करें, दैट इज़ 104 प्लस 24, इट विल रिजल्ट इन 128 मिली इक्वलेंट पर लीटर। This 128 milli equivalent per liter is less than this 140 milli equivalent per liter. So whenever what we do here, we just subtract this 140 from 128 milliliter milli equivalent per liter. हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी 12 मिली इक्वलेंट पर लीटर। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एनाइन गैप। एनाइन गैप क्या है कि ना, जो पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन थी उसमें से हमने जितने रेसिडुअल बॉडी में मौजूद नेगेटिव आयन से, दैट इज़ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट मेनली, उनको सेपरेट किया तो हमारे पास आ गया 12 मिली इक्वलेंट पर लीटर। इसको हमने इस तरह इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो एनाइन गैप है बेसिकली एक अनकैलकुलेटेड सी अनमेजर्ड सी अमाउंट ऑफ एनाइंस है जो कि बॉडी में मौजूद होती हैं। इनमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इनके अंदर हमारे पास फॉस्फेट्स हो सकते हैं जो कि अनमेजर्ड होते हैं, इनके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि अनमेजर्ड हैं, इनके अंदर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स हो सकती है जो कि अनमेजर्ड हैं, इनके अंदर हमारे पास अमोनियम आइंस हो सकते हैं जो कि अनमेजर्ड होते हैं।
ये जो अनमेजर्ड क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव आइंस होती है इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास है एनाइन, ठीक है। और ये एनाइन जो है हमारे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आते, इसलिए हम इनको कह देते हैं दैट इज़ एनाइन गैप। अब हमने एनाइन गैप को कैलकुलेट किस तरह करना होता है। एनाइन गैप को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है, दैट इज़ हाउ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आइंस, दैट इज़ सोडियम। हमने कितना कहा कि सोडियम है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है बाइकार्बोनेट की अमाउंट। बाइकार्बोनेट है 24 और क्लोराइड की कंसनट्रेशन कितनी है 104, दैट इज़ बेसिकली 140 माइनस 128, एट द एंड वी विल हैव 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज़ द एनाइन गैप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन from the point of view SCQ, from the point of university question. So this 12 milli equivalent per liter is the difference between the positive and negative ion concentration in our body. In order to understand what is metabolic acidosis, how this acidosis develop in our body, we have here we have hydrogen ion and bicarbonate concentration present in the secretions. They both combine to form bicarbonate and hydrogen combine to form carbonic acid, which in the presence of an enzyme that is known as carbonic anhydrase, which is present in this tubule apical layer, is converted into H2O, that is water and carbon dioxide. This product which is formed is taken up by the tubule lumen, carbon dioxide and water. Here it is converted into carbonic acid, which then again broken down into hydrogen ion plus bicarbonate ion concentration. Now in this tubule lumen we have a transporter which is known as, which we have basically an exchanger which is known as sodium hydrogen exchanger. What happens through this exchanger? This hydrogen which is found in the tubule lumen in excess quantity, it is moved out into the urine, into the excretory products, and the sodium which is present here in the urine is taken up by the tubule lumen. Here it is clear that the hydrogen that is present in the capillary lumen in excess is taken up into the excretory secretions via sodium hydrogen exchanger. This sodium hydrogen exchanger, what does it do? It takes hydrogen out and pulls sodium into the tubule lumen. Till then we have just discussed about this hydrogen ion. What happens with this bicarbonate ion? This bicarbonate ion has to be absorbed into our blood. How it is absorbed into the blood? There is another channel which is present in the tubule lumen, which is sodium bicarbonate co-transporter. What is it? Sodium bicarbonate co-transporter. It moves this bicarbonate ion into the blood along with this sodium. This sodium is also moved into the blood. So this bicarbonate and this sodium is moved into the blood, is transported into the blood via a channel which is sodium bicarbonate co-transporter. Now we have just discussed that this hydrogen ion and bicarbonate present in the secretion is reabsorbed into the tubule lumen in the form of bicarbonate and hydrogen. We have discussed via carbonic anhydrase it is converted into this form. What happens? This bicarbonate other than sodium bicarbonate co-transporter, this bicarbonate has to move into the blood via another channel which is present on the tubule lumen and which is known as basically bicarbonate chloride antiporter. What happens through this channel? This bicarbonate is moved into the blood and the chloride ion which is present here in the blood is taken up by this into the tubule lumen. Now what happens to this hydrogen ion? This hydrogen ion has to move out into the secretions as it is an excretory product for our body. If it resides in our body, it will lead to acidosis. So there is another channel which is present here. It is basically named as hydrogen ATPase. What is its work? Its work is to transport this hydrogen from lumen into the secretions. This hydrogen is moved into the
secretions into the urine. Again, there is another channel which is known as potassium hydrogen ATPase. What is its work? Its work is the potassium present in the secretions is taken up by this channel into the tubule lumen, and in exchange for it, this hydrogen which is in excess here is exchanged by this potassium. So here there is an accumulation of potassium in the tubule lumen. This potassium has to be moved into the blood via a channel which is present on the basolateral membrane of the capillary lumen, which is referred to as potassium chloride syn porter. What is the function of this potassium chloride syn porter? It basically moves this potassium into the blood, and this chloride ion which is absorbed here via channel which we have called bicarbonate chloride antiporter. This chloride will move along with potassium through potassium chloride syn porter into the circulation again. Along with this, we have another channel for chloride ion absorption which is present here, that is, it is simply referred to as chloride channel. Through this channel, the chloride ion present in the capillary lumen is reabsorbed into the blood. Now moving on towards an important channel which is located in the basolateral membrane. It is known as sodium potassium ATPase. You are very familiar with it if you have listened my previous videos. How does it work? It basically works by 3 sodium ions in and 2 potassium ions out of the cell. Now we have to refer main channels which we have to remember are hydrogen ATPase and this potassium hydrogen ATPase. Now moving on towards acidosis. What is further this acidosis? How this happens? Now again we consider that this is the tubule lumen, for example, and here it is the blood. Okay, and we have in the urine a presence of phosphate ions. We have presence of ammonia. So when this hydrogen, as we have, is secreted into the urine, this hydrogen, what does it do? It combines with this phosphate ion, it combines with this ammonium ion, and results in the formation of H3PO4, which is phosphoric acid, and combines with this ammonia to form NH4 positive, which is ammonium ion. If, for example, there is this no hydrogen comes to form this ammonia into ammonium ion, or this phosphate into phosphoric acid, what happens? These ammonium ions and phosphate ions accumulate in the body. When they accumulate in the body, they just basically disturb our anion gap. When they disturb our anion gap, it means that negative concentration of ions is increasing in our body. That will lead to acidosis. We have discussed that hydrogen is present here in the tubule capillary lumen. So two main channels, as I have told you before, that is hydrogen ATPase and potassium hydrogen ATPase. If, for example, these channels are genetically absent, genetically mutated, or they are not present, they are not functioning properly, so what happens? This hydrogen, which has to be exported through capillary lumen into the urinary secretion, will stay here in the lumen. When it stay here in the lumen, it will be absorbed into the blood with the passage of time. So one condition is, as we say, one condition is there is loss of hydrogen ATPase, number 1, and number 2, there may be loss of potassium hydrogen exchange ATPase. So what happens when these channels are genetically mutated? When these are genetically mutated or they have lost their function, what happens? Hydrogen accumulates. Where hydrogen accumulates? It accumulates in the capillary lumen, from where it is absorbed into the blood. So there we got one reason, that number 1, hydrogen ATPase deficiency,
Number 2, potassium hydrogen ATPase deficiency. When they both are deficient, hydrogen accumulates. Now proceeding on from this to a further point, when they are deficient, what happens? The cells in the tubule become permeable to what? Become permeable to hydrogen ions. That means the hydrogen which is present in this urine except these channels, what happens? The cells between these channels become permeable for this hydrogen, and the hydrogen seeps from these channels into the capillary lumen. ठीक है, पहले ही यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ऑलरेडी रेज है बिकॉज ऑफ दीज टू चैनल ब्लॉकेज, और फिर क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स फॉर दिस हाइड्रोजन रेज हो जाएगी, एंड दिस हाइड्रोजन फर्दर कंटिन्यूज टू रेज, एंड एट द एंड इट विल रिजल्ट इन एसिडोसिस. Clear? Now, what are the things which lead to these channel blockage? There may be any kind of genetic mutation which lead to these channels blockage, or there may be any kind of disease which leads to these channel blockage, or there are certain drugs. In the drugs we have lithium or amphotericin B. They basically do what? They increase the permeability of the cells for this hydrogen ion to move into the capillary lumen, and further they increase the acidity of the blood.